Good evening, everyone. Hope I'm audible. Just let me check the sound, etc. Then we will start the class, right? So we are sorry for the late today. इसमें there's no mistake of either me or anybody else. If there was a issue with the internet, तो internet का जब issue आता है हम लोग कुछ मतलब will become helpless. It doesn't mean that कि मैं आप लोगों का class लेने से avoid करता हूँ, ठीक है? तो ये एक बात हो गया. Now जल्दी से ज्वाइन हो जाओ क्लास के अंदर, फिर बात करते हैं हम लोग, ठीक है? जल्दी से फटाफट से ज्वाइन हो जाओ सब लोग प्लीज. जल्दी अपना दोस्तों के साथ लिंक शेयर करिए. लेट एवरीवन ज्वाइन एंड जस्ट टेल मी इफ आई एम ऑडिबल और नॉट, राइट? चलो चलो चलो, कोई बात नहीं. लेट मी चेक एवरीथिंग वंस. Good evening. Yes, yes, of course. I'll repeat everything in English as well. All right. So, good evening, everyone. Welcome to the class. So, first things first. Wish you a happy Diwali. Diwali पास आ रहा है. Please be safe. ठीक है? और मनाओ. Okay, Diwali. And make sure that you stay safe. That is more important. And most importantly, I wish all the happiness to you and your family and to everyone. ठीक है? I wish you a happy Diwali. फिर that is the first thing. Second thing is that I could not take the class yesterday and day before yesterday because I have been busy with my personal things. My personal things is that I am joining my MD. So because of that, I had to take a small gap for that joining, etc., etc. So though I am taking my MD, I'm joining into my MD in Bangalore Medical College. It doesn't mean that कि आप लोगों का classes रुकेगा. As soon as I will get back to Bangalore, settle there, आप लोगों के साथ मैं पूरा एग्जाम तक टच में रहूंगा. Till the end of your exam, I'll be in touch with you people and I will help you out. I will make sure to take online classes every possible time. I'll possibly come and take offline classes also. That will be managed by our team DPGI वाले. DPGI team से हम लोग manage कर लेंगे उसको. तो I'll need maybe few days to just get settled और उसके बाद we'll be back to normal. Okay, right. चलो let's start. So today's class is very simple and easy to understand. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे that is the most important topic which I have been wanting to teach you people. Poison versus antidote. Poisons versus antidote. Okay, so poisons versus antidote, there will be MCQ every single year. हर एग्जाम में there will be a question. Okay, so I want you people to get all the questions absolutely right. That is the target of our this thing. So that much being said, so how many of you people think that antidotes are so easy? How many of you think antidotes are so easy to understand? क्या लगता है आप लोगों को? So antidotes are very difficult. हम लोग फंस जाएंगे. And let's start with the first important thing. How to choose and when to choose and what to do, what not to do. That's what we are going to learn. And definitely we are going to get a MCQ. Okay? The first and most important thing I want you to understand that is OP poisoning. What is that? OP poisoning. OP poisoning is very sad thing. ठीक है, but still it happens in India. And we being a doctor, हम लोग डॉक्टर होके भाई ओपी पॉइजनिंग किसमें कॉमन होता है और उनको कुछ भी होने नहीं देना चाहिए. You should never let your OP poisoning patient to die as much as possible. You should be able to treat your patient as soon as you diagnose it. ठीक है, because the problem is that this OP poisoning is seen more in
फार्मर्स के अंदर दिखता है। बिकॉज ऑफ दैट भाई आप लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर दैट कि यू नेवर गो मिसडायग्नोज और मिसट्रीटमेंट in the OP poisoning. Okay, so OP poisoning, I want you to understand. OP poisoning means organophosphate. What are those? Organophosphates. Now when I'm talking about organophosphates, these organophosphates एक कैसा काम करता है, how do they work? So these organophosphate will enter into the body. So usually organophosphate कैसे enter होते हैं? They enter via what is that? Injection. मतलब क्या है? That is a suicidal attempt जिनके वजह से पेशेंट विल इंजेस्ट द पॉइजन। तो पॉइजन को इंजेस्ट कर लिया पेशेंट में, इंजेस्ट करने की वजह से द पेशेंट इज हैविंग व्हाट इज दैट? ओपी पॉइजनिंग। ओके, now listen to me. OP poisoning होने के बाद now patient will come to you with so many complaints, but all those complaints happens because of what? क्यों होता है? That is the question. क्यों होता है वो सारे कंप्लेंट जो भी हो रहा है इन द बॉडी, वॉट एवर इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. व्हाई इट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ वन रीजन. It will inhibit an enzyme called as acetylcholine esterase. It will inhibit an enzyme called as acetylcholine esterase. Good evening guys. Okay, now once it inhibits acetylcholine esterase, that will lead to increase of acetylcholine. ठीक है, acetylcholine बढ़ जाएगा. acetylcholine बढ़ जाएगा तो automatically that will increase the parasympathetic activity. Since parasympathetic activity is increased, very good Dr. Tiwari, you're absolutely right. Parasympathetic activation की वजह से होता क्या है? Now the patient will have hypersalivation. सर hypersalivation को लेके हमें करना क्या है? So listen to me very carefully. Hypersalivation starting में it might look silly thing, but अगर patient unconscious होता है and he is hypersalivating, it will become a very dangerous problem because patient might aspirate. But even more worse problems than that. Let's talk about that. What we are going to talk is that is the person will have decrease of heart rate. The person will have decrease of respiratory rate. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा तो व्हाट हैपेंस टू द ब्रोंकस? ब्रोंकस क्या हो जाएगा? ब्रोंकस मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि डायलेट हो जाएगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. ठीक. Now the patient is having a bronchoconstriction, so patient will have what? Difficulty in breathing. Very good. Now what else will happen? Listen to me very carefully. The patient जब भी parasympathetic activity बढ़ता है, there will be increase of frequency of urination. बढ़ जाता है क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है. बिकॉज ऑफ विच acetylcholine parasympathetic activity will be increased. That will lead to what is that? That is only your contraction of detrusor. Now the next thing what happens here is that the patient will have an increased parasympathetic activity, जिसके वजह से the patient will get other problem that is called as cold sweat. The patient will have a cold sweat. The cold sweat is a most important point I want you people to remember, and there are other things I'll tell you people. जो highlight करूंगा, you need to remember cold sweat will be there. Why? Because in the sweat gland, where? In the sweat gland we have cholinereceptor. कौन से रेसेप्टर होता है? cholinereceptor होता है. This is a exceptional case. इट इज एक्सेप्शनल केस होता है. स्वेट ग्लैंड के अंदर कोलिनोरेसेप्टर M3 रेसेप्टर होता है, जिसका एक्टिवेशन के वजह से द पेशेंट विल हैव व्हाट इज दैट? कोल्ड स्वेट. ठीक है, कोल्ड स्वेट के अलावा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा? मिड्रियासिस होगा कि मियोसिस होगा? द पेशेंट विल हैव वेरी गुड, दैट इज ओनली कॉल्ड एज मियोसिस. व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज नथिंग बट contraction of the pupil. So whenever patient comes to you with the complaints that patient might be conscious, unconscious, but all these complaints together, you need to think of what is that? OP poisoning. Whenever we are talking about OP poisoning के लिए the first important thing, first drug which you need to give is my dear students, atropine. आप लोगों को क्या देना पड़ेगा?
एट्रोपिन देना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, एट्रोपिन दोगे। एट्रोपिन के बाद में वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज एंजाइम रिएक्टिवेटर्स एंजाइम रिएक्टिवेटर्स को यूज करेंगे। एंजाइम रिएक्टिवेटर्स सच एज व्हाट आर दोस? हाँ जी बताओ, वेरी गुड, एट्रोपिन, यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट। इसके अलावा एंजाइम रिएक्टिवेटर्स कौन से होता है? सो वी हैव सम ड्रग्स कॉल्ड एज ऑक्साइम्स। कौन से होता है? ऑक्साइम्स। व्हाट आर दोस? Oximes. What are these oximes? These are the group of drugs which are enzyme activators. Enzyme को reactivate करवाते हैं। The drugs includes prolidoxin और एक ड्रग होता है ऑब्लिडॉक्सिन। व्हाट इज दैट? ऑब्लिडॉक्सिन। ठीक है, तो इनका क्या स्पेशलिटी है? देखो, आप लोगों को ओपी पॉइजनिंग का पेशेंट को पहचान लिया, सबको एट्रोपिन पता है, तो ऑक्साइम्स भी सबको पता है, तो एग्जामिनर आपको कहां पे फंसाएगा? ऑक्साइम्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच टाइप ऑफ पॉइजनिंग? ऑक्साइम्स आर absolutely contraindicated in something called as carbamate poisoning. What is that? Carbamate poisoning. Why carbamate poisoning के अंदर यूज नहीं करते हो? Because the reason is carbamates are such a chemical, ये परमानेंटली एंजाइम को ब्लॉक नहीं करते हैं, तो आपको रिएक्टिवेशन करवाने का जरूरत है ही नहीं। This is not going to block the enzyme permanently, so you don't have to do the reactivation of the enzyme. That is why you don't use the oximes in the carbamate poisoning. Okay, now the next important aspect. Enzyme reactivators are there. Now apart from this, I want you to understand that is what is the investigation we use for the monitoring. 100% MCQ ये वाली आएगा। कौन सी ऐसा इन्वेस्टिगेशन करोगे टू मॉनिटर? अगर आप सही ट्रीटमेंट किए हो या नहीं किए हो, whether you give a proper treatment or not. So to understand that, how will you do the investigation, or what investigation you use? The investigation used is called as RBC cholinesterase level. You are going to use, what is that? RBC cholinesterase level. कौन सी यूज करते हो? RBC cholinesterase level. ठीक है, so I want you to understand atropinization हो, ECG हो, all those are used for the monitoring, but patient का wellness and patient का response to the treatment is absolutely measured by this particular aspect called as RBC cholinesterase level के हिसाब से। ठीक है, so please don't get confused. atropine sufficiently दिए हो नहीं दिए हो वो देखने के लिए you are going to use atropinization, but investigation best used is RBC cholinesterase level. मुझे पता है आप लोगों को atropinization सुनते सुनते इस चीज को भूल जाओगे, तो एग्जामिनर आपको एग्जैक्टली ट्रैप यहाँ पे ही रखेगा, so I don't want you people to be trapped. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What exactly we need to learn? The next important aspect. The next important aspect I want you people to understand, that is OP poisoning. You understood that most important things: antidote, atropine, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, आरबीसी कोलिनेस्टेरेस, ओपी कैसा काम करता है समझा दिया। ठीक है, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? एट्रोपिन ओवरडोज. सी, एट्रोपिन को यू नेवर यूजुअली कॉल इट एज पॉइजनिंग, क्योंकि एट्रोपिन को मोस्ट ऑफ द केसेस से पॉइजनिंग नहीं होता है, रादर एट्रोपिन इसका ओवरडोज हो जाता है. व्हाई ओवरडोज हैपेंस इज दैट कि अगर डोज को मिसकैलकुलेट कर लिए तो क्या होगा? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स. एट्रोपिन इज ए कोलिनो ब्लॉकर. Atropine is a cholinoblocker. Atropine is a cholinoblocker. कौन सी cholinoblocker है? M cholinoblocker. Atropine is a M cholinoblocker. And atropine will cross the blood-brain barrier, my dear student. सुन लो, it will cross the blood-brain barrier. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अरे कोलिनोब्लॉकर है तो एम कोलिनो रिसेप्टर को बंद कर दिया, ऑटोमेटिकली इट विल ब्लॉक द पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स. व्हाट इज दैट? पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स एंड कंप्लीटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही बंद कर देगा. पैरासिम्पैथेटिक को बंद कर देगा. वंस पैरासिम्पैथेटिक इज क्लोज्ड, व्हाट इज गोइंग टू हैव? पेशेंट विल हैव इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट. पेशेंट विल हैव इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट. इसके अलावा और क्या हो सकता है? पेशेंट विल हैव व्हाट इज दैट? पेशेंट विल हैव मिड्रियासिस. Midriasis के अलावा what else can be seen? The patient will have delirium. Patient might can develop delirium.
बट डेलीरियम इज वेरी लीस्ट लाइकली, सो डेलीरियम को रिमेंबर मत करना, डेलीरियम रिमेंबर मत करना. द पेशेंट विल आल्सो हैव वन मोर थिंग, दैट इज द पेशेंट विल हैव कॉन्स्टिपेशन. कंफ्यूज मत होना. देखिए डीडी करके ढूंढने ढूंढने मत लग जाना, डीडी डेलीरियम और डायरिया दोनों को साथ जोड़ दिया, ऐसा मत किया करो प्लीज. व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक बंद हो जाएगा तो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच कॉन्स्टिपेशन विल अकर, बिकॉज ऑफ विच कॉन्स्टिपेशन विल बी देयर, because of which constipation will be there. So now the same clinical feature और एक जगह में दिखता है. Can anybody tell me same clinical features are seen with which poison? एट्रोपिन के साथ जो होता है सेम पॉइजन, सेम चीज होता है और एक पॉइजन के साथ, दैट इज विद धतूरा, दैट इज विद धतूरा. सर हाउ डू यू नो दैट धतूरा एंड एट्रोपिन have the same clinical feature when they are used? So listen to me very carefully. Atropine is used as a drug that is miscalculated and it might lead to overdose. ठीक है. धतूरा का नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. धतूरा का पूरा नाम क्या है? धतूरा एट्रोपा. इसका नाम है क्या है? धतूरा एट्रोपा. मतलब एट्रोपिन इज ए अल्कलॉइड जो कहां से आता है? धतूरा प्लांट से आता है. ठीक है. So now listen to me very carefully. Dhatura is not used the same, sorry, it's same clinical feature, I'm sorry, spelling mistake. Okay, so same clinical features are seen with Dhatura atropa. ये दोनों के लिए एंटीडोट है, ये दोनों के लिए एंटीडोट. The antidote which we use is called as my dear student, that is only called as फाइजोस्टिगमैन. What is that? फाइजोस्टिगमैन. बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं. मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर नियोस्टिगमैन क्यों नहीं यूज करते, सर पायरिडोस्टिगमैन क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज वी यूज फाइजोस्टिगमैन, क्योंकि फाइजोस्टिगमैन इज such a drug which will cross the blood brain barrier. अब मैं स्टार्टिंग में एक बात बताया था, क्या बताया था आप लोगों को? एट्रोपिन विल आल्सो क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. सो इसके अंदर सीएनएस मैनिफेस्टेशन को भी ठीक करना है, तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करते हो? एंटीडोट क्या करते हो? फाइजोस्टिगमैन यूज करते हो विच क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर. ठीक है. नाउ तो फाइजोस्टिगमैन को यूज करोगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सर अगर फाइजोस्टिगमैन का ओवरडोज होगा तो क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली फाइजोस्टिगमैन का ओवरडोज हो गया या नहीं, तो एनी ऑफ द, फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द ACHE इनहिबिटर्स, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ACHE इनहिबिटर ओवरडोज, ACHE इनहिबिटर ओवरडोज के अंदर करोगे क्या? ACHE इनहिबिटर के अंदर क्या हो जाएगा? दैट विल इनहिबिट द ACHE, जिसकी वजह से इंक्रीज ऑफ असिटाइल कोलिन. इफ देयर इज अ इंक्रीज ऑफ असिटाइल कोलिन, automatically there is a increase of parasympathetic activity. So because of which I want you to remember here, what is that? That is very easy to understand. ACHE inhibitors that such as physostigmine, pyridostigmine, neostigmine, all of them can have a same clinical feature. इनके अंदर एंटीडोट will be atropine, इनके अंदर एंटीडोट will be atropine. Because क्योंकि physostigmine के वजह से the patient will have what is that? Elevated acetylcholine, and फाइजोस्टिगमैन के वजह से एलिवेटेड असिटाइलकोलिन, दैट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. एंड उसको ट्रीट करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर को यूज कर लेते हैं. कौन सी है वो? एट्रोपिन. कौन सी है वो? एट्रोपिन. वेरी गुड. नाउ लेट्स कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. व्हाट इज दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग? माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज अ मस्करिन कंटेनिंग, कौन सी होता है? मस्करिन कंटेनिंग मशरूम्स. Muscarine containing mushrooms. So there are some type of mushrooms जिसको क्या करते हैं? They use it for नशा करने के लिए. Means people, there are some specific types of mushrooms which are used for psychoactive purposes. That means what? The person is having hallucinations or having a euphoric effect. That is the reason he is using. What is that? That is hallucination causing mushroom. but वो मशरूम के अंदर sometimes एक केमिकल होता है that is we cannot say that will make a totally wrong meaning ना, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स है वो. ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स है बट बॉडी के अंदर फाइजोस्टिगमैन की जैसा काम करता है, बट दे डोंट कंटेन फाइजोस्टिगमैन. ठीक है, समझ गए ना? मस्करिन कंटेनिंग मशरूम.
Muscarine is such a chemical. ये करता क्या है? It will go and activate. What is that? That is only called as a M receptor. ये सिर्फ और सिर्फ किसको एक्टिवेट करेगा? M receptor को एक्टिवेट करेगा. M receptor एक्टिवेट होने के वजह से the person will have what is that? Increase of parasympathetic activity. Increase of parasympathetic activity. अगर parasympathetic activity बढ़ गया है तो एंटीडोट क्या है? एंटीडोट फॉर मस्करिन, मस्करिन ओवरडोज के लिए, मस्करिन कंटेनिंग मशरूम के लिए एंटीडोट. एंटीडोट इज वेरी इजी. क्या करना चाहिए? अरे यार एम रेसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है तो जाओ भैया बंद करा दो एम रेसेप्टर को. क्या कैसा करोगे? यू यूज एट. ठीक है, तो डू नॉट गो इनटू द एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑफ अर्ली मशरूम पॉइजन, लेट मशरूम पॉइजनिंग के. अरे भाई तुम्हें पूछा जाएगा कि इनिशियल ट्रीटमेंट के अंदर एंटीडोट कौन सी होता है, पहले वो चीज पढ़ लो. वो चीज छोड़ के अर्ली लेट स्टेजेस पढ़ने जाते हो तो पहले तो ये इसको एग्जामिनर को ये क्वेश्चन तो पूछने दो, उसके बाद देख. That's the thing you need to understand. ठीक है, चलो let's go to the next important antidote. What is that next important antidote? The next important antidote is that कि अगर patient is having a opioids, what is that? Opioids overdose. Opioids क्या करते हैं? Listen to me. Opioids कैसा overdose होते हैं? They stimulate the opioid receptor. They stimulate the opioid receptor. Opioid receptor stimulate होने के वजह से patient will come to you in this type of condition, loss of consciousness. Point number one. Point number two, what is that? Patient will have a decreased respiratory rate. ठीक है, there can be or there might not be plus or minus, but most of the cases opioid poisoning कब होता है? IV drug abusers होते हैं. So there can be or there might not be, मतलब जो visible हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. They are injection marks. What is that? Injection marks. So if he is taking multiple IV injections, so the person will have by injection marks in the cubital area. The person will have a injection marks. Injection marks. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये ओपियाइड रेसेप्टर स्टिमुलेट होने की वजह से पेशेंट विल हैव इवन कॉन्स्टिपेशन. बट कॉन्स्टिपेशन कंप्लेंट लेके आएगा क्या? तो मुझे कभी लोग बोल देते हैं कि सर ओपियाइड्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी तो होती है ना, तो उसको क्यों पॉइजनिंग में नहीं पढ़ाते? भाई ओपियाइड ओवरडोज हो जाएगा ना, ही विल डाई ऑफ रेस्पिरेटरी सप्रेशन नॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन. ही विल डाई ऑफ रेस्पिरेटरी सप्रेशन नॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन. समझ लो ना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं वो पेड़ का इफेक्ट तो पढ़ाया हूं ना. व्हाट इज दैट? एक निमोनिक दिया हूं. व्हाट इज दैट? द निमोनिक इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट इज दैट? पीएम केस. एम फॉर व्हाट डिड आई टीच यू पीपल? एम फॉर मियोसिस. एम फॉर मियोसिस. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू. ठीक है, तो ये क्या करवाता है? प्यूपिल को छोटा करवा देता है. मियोसिस विल अक्कर. व्हाट विल अक्कर? मियोसिस विल अक्कर. मियोसिस भी हो जाएगा. सो पेशेंट विल हैव ए नैरो प्यूपिल. तो हम लोगों को ट्रीटमेंट कैसा करना है? तो ट्रीटमेंट करने के लिए all you need to do is what? Block the opioid receptor. Block the opioid receptor. So how do you block the opioid receptor? By using opioid. What is that? Opioid antagonist. ध्यान दो antagonist पे, क्योंकि एग्जामिनर नोस वेरी वेल. बहुत बार पूछा गया है कि ओपियाइड ओवरडोज का ट्रीटमेंट क्या है, और वहां पे ऑप्शन में दिया होगा ओपियाइड एगोनिस्ट एंड ओपियाइड एंटागोनिस्ट. तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो प्लीज अंडरस्टैंड, ओपियाइड एंटागोनिस्ट आर यूज्ड. एंटागोनिस्ट, व्हाट इज दैट? द बेस्ट ड्रग फॉर एनी ओपियाइड ओवरडोज इमीडिएटली ट्रीट करने के लिए. व्हाट इज दैट? दैट इज ओनली कॉल्ड एज naloxone. What is that? Naloxone. Sir, why do we use naloxone only? Why not naltrexone? Because naloxone is a short acting drug. First thing, short, and also it is a fast acting drug. Short and fast acting drug. That is the reason we are going to use naloxone. We are going to use naloxone. ठीक है, तो वी हैव वन मोर ड्रग. व्हाट इज दैट? दैट इज ओपियोइड विथड्रॉवल के टाइम पे. व्हाट इज दैट? विथड्रॉवल के टाइम पे, विथड्रॉवल का टाइम पे मैनेजमेंट करने के लिए वी कैन यूज. व्हाट इज दैट? दैट इज ओनली कॉल्ड एज naltrexone. What is that? Naltrexone. But why we are not using naltrexone in a acute opioid overdose? Because the person needs a drug which acts very fastly, but naltrexone is a long and slow acting drug. That is why we are not going to use it in the treatment of acute opioid overdose. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट Okay, very good, very good. Now next important thing is that there will be a question. What is that, my dear students? Listen to me very carefully. Warfarin overdose के लिए क्या करोगे? Warfarin overdose के अंदर I want you to understand, warfarin will do one thing.
it will inhibit something called as enzyme called as vitamin K epoxidase. What is that? A vitamin K epoxidase को inhibit करता है. तो इसका antidote will be what? Of course, treatment क्या करोगे? आपको vitamin K ही दे दो, बस क्या दे दो? vitamin K ही दे दो. अगर फॉर एग्जाम्पल वारफेरिन और इन दोनों का अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वाइस वर्सा कैन बी अप्लाइड मींस व्हाट, वारफेरिन ओवरडोज में विटामिन के को यूज करो, विटामिन के ओवरडोज के अंदर वारफेरिन को यूज करो, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर स्लो एक्टिंग ड्रग्स, both of them are acting in the same mechanism, that is gamma carboxylation of the factor number 2, 7, 9, 10 के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. And most importantly, warfarin directly involves by inhibiting vitamin K epoxidase. ठीक है? That is the reason we use vitamin K in warfarin. Next important aspect, there is question, this has been asked already आप लोगों को, that is heparin अगर किसी को गलती से आप लोगों ने ज्यादा दे दिया तो क्या करोगे? ज्यादा डोज कर दिया. That depends on the overdosing. Basically equal amounts are used. ठीक है? हेपेरिन के अंदर आई वांट यू टू, हेपेरिन ओवरडोज के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हाट इज द ड्रग? हेपेरिन का एंटीडोट बताओ. हेपेरिन अगर गलती से किसी को तुमने हेपेरिन ज्यादा दे दिया, वाह विल यू ट्रीट? वी आर गोइंग टू यूज अ ड्रग कॉल्ड एज, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटामाइन सल्फेट. तो इस चीज को याद रखो. डायरेक्टली दे आस्क यू व्हाट इज द एंटीडोट फॉर हेपेरिन, दैट इज योर प्रोटामाइन सल्फेट. वेरी गुड Shavin, very good. Now let's get to the next important aspect. What is the next important aspect? The next important aspect is my dear students, these antidotes will be there surely. इतने तक मैंने जो पढ़ा है इसके अंदर से आएगा, but I want to teach you well into the next important aspect, that is calcium gluconate. कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसा काम? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट बेसिकली इट कैल्शियम एंटागोनाइज मैग्नीशियम. पहली बात तो ये है, कैल्शियम क्या करता है? मैग्नीशियम को एंटागोनाइज करता है. कैल्शियम ग्लूकोनेट विल डायरेक्टली स्टिमुलेट कैल्शियम चैनल्स, डायरेक्टली स्टिमुलेट कैल्शियम चैनल्स. तो कैल्शियम चैनल कहाँ पे है? बॉडी के अंदर, हार्ट में है. हार्ट के अंदर कैल्शियम चैनल होने की वजह से इफ यू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट इन रॉन्ग फॉर्म, व्हाट कैन हैपन? पेशेंट कैन डाई इन फ्रंट ऑफ यू, हार्ट गोइंग इनटू ए सिस्टोल एंड स्टॉप्स देयर. तो इसलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट को क्या करना चाहिए? स्लोली देना चाहिए. तो कैल्शियम एंटागोनिस्ट मैग्नीशियम, एंड एग्जैक्टली मैग्नीज का ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट क्या दोगे? द एंटीडोट व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इज माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज your MgSO4. basically you need to use magnesium. Why do we use magnesium? Because calcium का activity is antagonized by magnesium, magnesium का एक्टिविटी इज एंटागोनाइज्ड बाय कैल्शियम. अगर मैग्नीशियम का ओवरडोज हो गया तो क्या करोगे? मैग्नीशियम का ओवरडोज हो गया तो ट्रीटमेंट विल बी व्हाट? कैल्शियम ग्लूकोनेट. तो क्या कब होगा ये? तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लैम्सिया, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लैम्सिया, during the treatment of eclampsia. Now listen to me very carefully. During the treatment of eclampsia, MgSO4 is used. MgSO4 is used. अगर ओवरडोज हो जाएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? Hyperkalemia is not an overdose, but hyperkalemia, I'll tell you the treatment. The best way you can treat hyperkalemia is normally potassium कहाँ रहता है? Potassium stays inside the cell. So आपको क्या करना पड़ेगा? Blood के अंदर है, inside the blood the potassium is elevated. You just have to put the potassium into the cell. So by giving what? Insulin and glucose together. That is not a overdose. That should be called as, what is it, my dear doctors? आप लोगों को बोलना चाहिए, that is only ion imbalance. Point number one. वो एक तरीका. I told you insulin plus glucose is one technique. Technique number two, you can use diuretics, क्योंकि diuretics especially loop diuretics will cause hypokalemia. Hyperkalemia था, आप लोग यूरिन के अंदर से निकाल दे रहे हो किसको? पोटेशियम को, तो ऑटोमेटिकली पोटेशियम लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है. देन next important thing, we can also use if the patient is having, what is that, hyperkalemia, we are also going to give him calcium gluconate to prevent arrhythmia. इसके अलावा if there is a severe hyperkalemia, you can consider doing the dialysis also. So what are the treatment? Insulin plus glucose, ठीक है. Then diuretics,
डायलिसिस एंड अरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम should be given. So these are the things which you need to remember for the hyperkalemia. MgSO4, very good, Itachi. That is, the answer is, what is that? The patient will have loss of, what is that? Agar overdose ho gaya, if there is a overdose, there will be loss of something called as a knee-jerk reflex. There will be loss of something called as knee-jerk reflex. So मैं क्यों कर रहा हूँ ये पॉइजनिंग का क्लास? आई नो दैट आप लोगों को याद होगा, बट मोस्ट ऑफ यू पीपल विल रिमेंबर सिर्फ एंटीडोट का नाम याद कर लोगे और मैकेनिज्म भूल जाओगे. एग्जामिनर एग्जैक्टली तुम्हें वही फंसाता है. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास. ठीक है, चल. सो ओवरडोज विल लीड टू लॉस ऑफ knee-jerk reflex. तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें यार? ये अभी तो पढ़ाया था, कैल्शियम का एक्टिविटी मैग्नीशियम बंद करवाता है, मैग्नीशियम का एक्टिविटी कैल्शियम बंद करवाता है. द ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट. व्हाट इज दैट? कैल्शियम ग्लूकोनेट. ठीक है ना. सो मैग्नीशियम ओवरडोज के लिए ट्रीटमेंट क्या है? कैल्शियम है. कैल्शियम ओवरडोज के लिए ट्रीटमेंट क्या है? magnesium. What is that? Magnesium. So this is the story of your, what is that? Antidotes. This is the story of your antidotes from the pharmacology side. जितने भी आप लोगों को MCQs आएंगे, कोई भी MCQ डायरेक्टली नहीं आएगा आप लोगों को, rather they will twist and ask you people. ठीक है, but before finishing the class, 2 मिनट के लिए बात सुनो please. Kindly listen to me. So my dear students, I will be taking your classes live. I will be taking your classes live every single day till the exam, but only for 3 or 4 days. Schedule might go like, little different, just because I'm going to Bangalore. I'm leaving from Delhi. That is why I might be not be able to take the class in a few days. But it doesn't mean that कि मैं DPGI से छोड़ के नहीं जा रहा हूँ. I am with team DPGI. I am with you people. ठीक है, तुम्हारे लिए wherever I am studying PG in Bangalore Medical College, वहां से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा. ठीक है, I am taking up my I'm joining into my NEET PG course. तो इसके वजह से मैं क्या हो गया कि आज शेड्यूल आगे पीछे हो गया. ठीक है, that is the reason which had to be. आज का क्लास शॉर्ट भी हुआ एंड कल परसों का क्लास मिस भी हुआ. ठीक है, थैंक यू सो मच. एक बात याद रखो, आप लोग मुझे कंग्रेचुलेशन बोल रहे हो ना, आप लोगों को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ऑन योर सक्सेस. आई वांट टू कंग्रेचुलेट एवरी सिंगल वन ऑफ यू. एंड मैं कहीं पे भी गया हो, बैंगलोर गया हो, कहीं और भी गया हो, कुछ भी हो, तुम्हारे लिए लाइव तो पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो डीपीजीआई छोड़ के मैं नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, डीपीजीआई और हमारा टीम तो भाई हम बहुत मतलब कितने भी दूर है, हम कोऑर्डिनेट करेंगे तुम्हारे लिए. ठीक है, दैट इज द थिंग like the first thing I got call, like when I said that I'm going to Bangalore, the first thing they said was like कि आप बेंगलोर जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये मत सोचो कि अपना बच्चों को क्लास नहीं लोगे. दैट वाज द फर्स्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, सो दैट मच दे आर पुटिंग एफर्ट फॉर यू पीपल ऑल्सो. हम लोग भी कर रहे हैं और आप लोग अकेले नहीं हो. यू कीप डूइंग योर बेस्ट एंड यू कैन बी सक्सेसफुल. ओके, डेफिनेटली यार, क्यों नहीं हो, आराम से हो जाएगा पास. ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहना, हो जाएगा. ठीक है, सो आई टुक, अरे गेस करो मैं कौन सा ब्रांच लिया होगा. मुझे तो एक ही ब्रांच करना है. See guys, I have interest in research and in other type of development in for the life. ठीक है, पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते I want to like do the research and even I have bigger things. तो मुझे वो सारे चीजों को अचीव करने के लिए I can do it only with MD pharmacology. तो that is why I am taking up MD pharmacology. ठीक है, MD मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, MD फार्मा ले रहा हूँ. ठीक है, सिर्फ बैठ के मतलब बैठ के पेशेंट देख के मैं सेटिस्फाई होने वाला में से नहीं हूँ. एंड एमडी मेडिसिन करने के बाद इट्स नॉट ए इजी फील्ड दैट कि मतलब ऐसे ही आसान से मतलब पेशेंट को छोड़ दिया एंड अपना रिसर्च करने के लिए वगैरह वगैरह के लिए चले गए. नहीं, तो मुझे करना है रिसर्च, मुझे करना है कुछ बड़ा, लाइक कुछ सक्सेसफुल थिंग विच विल बी यूजफुल फॉर ह्यूमन काइंड. तो वो करने के लिए तो भाई दैट इज माई ब्रांच.
यस 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 यस, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा न्यूरोलॉजी का रिक्वेस्ट मैंने इग्नोर नहीं किया, जस्ट थोड़ा डिले हो गया, बट न्यूरोलॉजी में करवाऊंगा, दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है। एंड कहाँ पे लिया हूँ, कहाँ पे मैंने नीट पीजी का सीट लिया, मतलब मेरा एमडी फार्मा का काम पे लिया हूँ, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पे लिया हूँ। सो इट डजेंट मीन दैट कि डीपीजे से मैं अलग हो रहा हूँ, हम अलग नहीं होने वाले हैं, हम करेंगे, धमाका मचाएंगे, ठीक है। अरे लग जाएगा यार, देखो 10 क्वेश्चन तुक्का लगाएंगे तो दो तो लग जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि 300 के 300 तुक्का लगाओगे ना, तो कोई बात नहीं, तुक्का भी लगेगा, लक भी साथ देगा, बट वो सबसे पहले अपना मेहनत पूरा कंप्लीट देना, ठीक है। सो आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर लॉन्ग टाइम एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग राइट, तो मुझे वो सारे चीज़ों के अडाप्ट होने के लिए मुझे भी मतलब एक दो दिन तो मतलब सांस लेने के तो टाइम चाहिए था। दैट इज द रीजन आई कुड नॉट टेक द क्लास। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट को कॉल किए होंगे, मुझे पता है आप लोगों की तरफ मैसेज गया होगा कि सर ने क्यों क्लास नहीं लिया वगैरह करके, तो ओके, आई डू दैट। यू वांट टू लर्न ऑल द सीएनएस एनाटॉमी राइट, करवा देंगे, ठीक है, सीएनएस एनाटॉमी के साथ साथ करवा देंगे, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। मुझे पता है कि तुम लोग मैसेज किए होंगे, बट द रीजन इज दिस ओनली, ठीक है। चलो गाइस, फिर जो भी होगा मैं ग्रुप में अपडेट करते रहूंगा, और मैं ना ही ग्रुप छोड़ रहा हूँ ना ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बस प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। वी आर विथ यू पीपल, हम लोग हमेशा साथ है तुम्हारे लिए, ठीक है। वी आर ऑलवेज रेडी टू वर्क एनी एक्सट्रीम फॉर यू पीपल, बस आप लोग भी उतना ही कॉन्फिडेंस से रहो, आराम से पास हो जाओ, नो प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलो फिर मिलते हैं, आपका एंटीडोट का ये हो गया, वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी रेस्ट तुम न्यूरोलॉजी पूछो, न्यूरोलॉजी पढ़ाऊंगा, और जो भी है पढ़ा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनस्थेशियोलॉजी का क्वेश्चंस भी करेंगे, और वी शुड डू ऑर्थोपेडिक्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार माइक्रोबायो का क्वेश्चन एंड आईबीक्यू करवा देता हूँ, देन आप लोगों को सर्जरी का तरफ से तो एमसीक्यू सडन, और ये सब होने के बाद और विल डू वन मोर पेपर ऑफ गायनेकोलॉजी। ऑलरेडी मैंने गैनी का एक पेपर करवाया आप लोगों को, यू कैन फाइंड इट इन द वीडियोस। अब और एक वीडियो करवाते, मतलब और एक करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, आप तो का ऐसा करते हैं ना यार, इमेज लेके आता हूँ, क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन के साथ रिवीजन करा देता हूँ आपका। आप तो चाहिए ना, आप तो करा, नो इश्यूज, ठीक है। आपको जो चाहिए करा देंगे यार, टेंशन ही मत लेना, बिल्कुल। मतलब आई एम लाइक इन ए लाइव एंड आई एम टेलिंग यू पीपल, डेफिनेटली विल डू इट, ओके। चलो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। जो भी क्लासेस होगा वो तो आते रहेगा, एंड बचा हुआ अपडेट्स तो मैं आप लोगों को देता रहूंगा थ्रू द ग्रुप, ठीक है।